Hello student. So today we are going to practice the past papers of the topic work, energy and power. So in this we have this first question from the topic work, energy, power. This question is from my June 2010 paper. Question number 3, paper 2, 1. क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है Figure 3.1 shows a student rubbing her hand together. State the main energy conversion that caused the hands to become warm. सो कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है टू मेक द हैंड वार्मर. सो इसका आंसर में वी नो दैट द एनर्जी इन द ह्यूमन बॉडी इज chemical energy. So basically chemical energy is being converted into kinetic energy and kinetic energy is further converting into heat energy. 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 2 पॉइंट हमने लिखने हैं इसके लिए. सो केमिकल एनर्जी into heat energy. State why the hand becomes even warmer if they are pressed harder together when rubbing. So जब हाथों को ज़्यादा ज़ोर से हम रब करते हैं तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है. Why this is so? More force increase work done producing more heat. जब आप ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं तो ज़्यादा वर्क डन होता है बिकॉज वर्क डन का फार्मूला हमारे पास क्या है फोर्स इनटू डिस्टेंस. जब आप ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज़्यादा वर्क डन होगा. ज़्यादा वर्क डन की वजह से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी एंड रिजल्ट मोर हीट एनर्जी. द एवरेज फोर्स यूज टू स्लाइड वन हैंड अलॉन्ग अदर इज 1.2 न्यूटन. In each movement, one hand moves 0.08 meter, the other hand remains stationary. Calculate the number of movements needed for 2 joules of work done to be done. So सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि एक दफ़ा हैंड मूव करने में कितना वर्क डन होता है. वी नो द फार्मूला फॉर वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इज 1.2 न्यूटन एंड एक दफ़ा मूव करने में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर होता है 0.08. सो वर्क डन विल बी 1.2 मल्टीप्लाई बाय 0.08 दैट इज 0.096 joules and we have to produce 2 joules of work. So 2 joules प्रोड्यूस करने के लिए कितनी दफ़ा हैंड मूव्स करने पड़ेंगे. उसके लिए हम क्या करेंगे 2 जूल्स डिवाइड बाय 0.096. 2 डिवाइड बाय 0.096 एंड द आंसर विल बी 20.8. राउंड ऑफ करेंगे तो 21 times. So you have to move 21 times your hands to produce 2 joules of energy or 2 joule of work done. In each movement 0.2 second, each movement takes 0.2 second. Calculate the average power developed. We know the formula for the power. Power का formula हमारे पास क्या होता है power is equal to work done over time. एक दफ़ा हैंड मूव करने में कितना वर्क डन हो रहा है दैट इज 0.096 और टाइम कितना लग रहा है 0.2 सेकेंड. सो 0.096 divided by 0.2, the answer is 0.48.
और पावर की यूनिट क्या होती है, सॉरी 0.48, पावर की यूनिट होती है हमारे पास वॉट, वॉट के लिए W का सिंबल। सो पावर प्रोड्यूस विल बी 0.48 watt. Second question we have here. Figure 2.1 shows a motor used to operate the lift elevator. There is a man in the lift. The input power to the motor is 6200 watts. Define watt. So watt को कैसे define करेंगे हम? watt को define करने के लिए watt किस चीज की यूनिट होती है, पावर की, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम. सो व्हेन 1 joule वर्क इज डन इन 1 second, the power produced will be 1 watt. So 1 watt is 1 joule in 1 second. जब आप 1 जूल काम करेंगे 1 सेकंड में तो पावर 1 watt प्रोड्यूस होगी. The lift and the man have the total mass of 580 kilogram. The lift moves up a distance of 12 meter in 15 seconds. Calculate the tension in the cable when the lift is moving with constant speed. So यहाँ पे कीवर्ड हमारे पास क्या है, constant speed. याद रखें जब ऑब्जेक्ट constant speed या constant velocity से मूव कर रहा होगा तो उस वक्त फोर्सेस बैलेंस होंगी. फोर्सेस बैलेंस होने का मतलब क्या है कि जितनी फोर्सेस डाउनवर्ड होंगी उतनी फोर्स अपवर्ड होगी. अब यहाँ इस लेफ्ट में देखें आप, जो डाउनवर्ड फोर्स लग रही है दैट इज वेट ऑफ द लिफ्ट, और अपवर्ड फोर्स जो लग रही है दैट इज टेंशन इन द केबल. सो इन दिस केस टेंशन जो होगी वो वेट के बराबर होगी क्योंकि लिफ्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, सो फोर्सेस विल बी बैलेंस. सो अगर हम वेट मालूम करने लेंगे तो दैट विल बी द टेंशन. सो टेंशन इज इक्वल टू वेट, एंड वेट इज इक्वल टू mg. 580 मल्टीप्लाई बाय g की वैल्यू कितनी है हमारे पास, नाउ वी हैव टू टेक 9.8 मीटर पर सेकेंड. 580 multiplied by 9.8, answer will be 5684. और इसको जब हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करेंगे तो दैट विल बी 5700 न्यूटन. टेंशन भी फोर्स होती है और उसकी भी यूनिट न्यूटन होती है, सेम एज द फोर्स. Calculate the increase in potential energy of the lift and the man. Increase in potential energy. Potential energy का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, gravitational potential energy that is equal to mgh. मास गिवन है हमारे पास 580, वैल्यू ऑफ g इज 9.8 और हाइट हमारे पास क्या है 12 मीटर. 580 multiplied by 9.8 multiplied by 12, answer is 68208. और जब हम इसको 2 से में राउंड ऑफ करेंगे तो दैट इज 68,000 joules. So the unit will be joules. Remember कि हम वैल्यू ऑफ g 9.8 ले रहे हैं क्योंकि न्यू सिलेबस में वैल्यू ऑफ g 9.8 है. इफ़ यू लुक एट द मार्किंग स्कीम योर आंसर मे बी डिफरेंट क्योंकि ओल्ड पेपर्स में कैलकुलेशन जो है वो g की वैल्यू 10 से की गई है, सो आंसर माइट बी डिफरेंट. कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ द मोटर. अब एफिशिएंसी का जब फार्मूला यूज़ करते हैं तो या तो एफिशिएंसी में हम पावर यूज़ करेंगे या एनर्जी यूज़ करेंगे. सो एफिशिएंसी का फार्मूला हमारे पास होता है यूजफुल वर्क डन आउट ऑफ टोटल एनर्जी प्रोवाइडेड.
अब यहाँ से एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है हमने। एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला हमारे पास होगा, दैट इज यूजफुल वर्क आउट ऑफ टोटल एनर्जी इनपुट। यूजफुल वर्क हमारे पास कितना है, 68208 जो कि हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है आउट ऑफ टोटल एनर्जी इनपुट। अब टोटल एनर्जी इनपुट मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल एनर्जी हमें गिवन नहीं है, टोटल एनर्जी की बजाय हमें गिवन है पावर विच इज 6200 वाट। सो 6200 और इस पावर को हम कन्वर्ट करेंगे एनर्जी में। एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। टाइम हमारे पास कितना है, 15 सेकेंड। सो मल्टीप्लाई बाय 15 and let me get the answer. So answer we have 0.733. So 0.73 is enough for two significant figure. और अगर आपने परसेंटेज में लिखना है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, 73% will be the answer. But anyhow you can answer in decimal or in percentage, either way. Next question we have, figure 3.1 shows the part of a small hydroelectric system that generates electricity from moving water. Every minute water with the kinetic energy 14,000 joules emerges from the pipe. The water turns a turbine that connected to the generator. Half of the kinetic energy is given to the generator. टोटल एनर्जी कितनी है, 14,000, और उसमें से हाफ एनर्जी जो है वो जनरेटर को गिवन है। कैलकुलेट द पावर इनपुट ऑफ द जनरेटर। सो सबसे पहले हम एनर्जी गिवन टू द जनरेटर निकाल लेते हैं, दैट इज हाफ ऑफ द 14,000 विच इज 7,000, एंड पावर इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। एनर्जी को टाइम से डिवाइड कर देते हैं। टाइम हमारे पास 1 मिनट है, 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड। सो 7,000 डिवाइड बाय 60, 1000 divided by 60, answer would be 116 watt, or round off to two significant figure, you can write 120 watts, two significant figure में round off करके। Suggest a reason why only some of the kinetic energy of the water is given to the generator. सो इस तरह के ओपन क्वेश्चन में कोई भी रीजनेबल आंसर एक्सेप्टेबल होता है। वन पॉसिबल रीजन कुड बी, क्योंकि वाटर की सारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाती, क्योंकि वाटर टरबाइन को हिट करने के बाद भी कंटिन्यू मूव करता रहता है। सो नॉट ऑल द एनर्जी इज ट्रांसमिट टू द जनरेटर बिकॉज water is still moving and have kinetic energy after passing through turbine. 100% ट्रांसफर होने का मतलब ये होता है कि वाटर जो है वो टरबाइन से हिट करने के बाद स्टॉप हो जाए। बट सिंस द वाटर इज स्टिल मूविंग, it do have the kinetic energy even after passing through the turbine. It means not all the energy is transmitted to the turbine. That is why only 50% is transmitted. Okay, hydroelectric system use sources of the renewable energy. State what is mean by renewable energy. So what are renewable sources of energy? We already have discussed all the energy sources that can replenish and can be used again and again without the fear of running out. And state one source of non-renewable energy. Non-renewable sources of energy are the one that can be finished and cannot be used once they are over. So examples of non-renewable sources of energy में हम coal लिख सकते हैं, natural gas can be written, crude oil may also be written. Next question we have got, figure 2.1 illustrates the journey of the cyclist from point A to point B. Points A and B are at the same height. The cyclist starts from rest at A and pedals up and over a hill.
near the bottom of the hill. She starts the brakes to brake and comes to rest at B. Describe the energy changes that take place as she pedals up the hill at the constant speed. Now in this question, remember यहाँ पे जो कीवर्ड है जिस पे आपने फोकस करना है कि the cyclist start from rest and pedal over the hill near the bottom of the hill. She starts the describe the energy change that take place as she pedal at constant speed. अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो इट मीन्स देर इज नो गेन इन काइनेटिक एनर्जी. सो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को आप यूज नहीं करेंगे. द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज हर बॉडी एंड दैट प्रोवाइड द केमिकल एनर्जी. सो द केमिकल एनर्जी is converting into gravitational potential energy because she is gaining the height, and part of the energy wasted as heat or thermal energy. Remember, since the question is of 3 marks, so at least 3 पॉइंट आपने यहाँ पे मेंशन करने होंगे. सो हमने कौन कौन से पॉइंट मेंशन किए? The body of her, the energy of her body, chemical energy, is being converted into gravitational potential energy, gain in gravitational potential energy, and sum of energy is being wasted in form of heat energy. Explain how the law of conservation of energy applies to the complete journey from A to B. So what law of conservation of energy states that the energy cannot be created, neither be destroyed. It can only convert from one to another form. So initially the chemical energy at A will be equal to heat energy at B. Since the total energy gain is 0, because जो भी उसने वर्क डन किया है फाइनली शी रीचेस टू द सेम लेवल एट बी जहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी विल बी सेम एज ए. सो नो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी नीदर इन काइनेटिक एनर्जी. सो इसका मतलब है कि जो भी उसने वर्क डन किया है दैट ऑल कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी एंड द टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय द गर्ल is equal to the energy transferred in thermal energy. At one point in the journey, the gravitational potential energy of the cyclist has increased by 5400 joules. The mass of the cyclist is 60 kilogram. The gravitational field strength is 10 Newton per kg. Calculate the height above A of the cyclist at this point. So height मालूम करनी है हमने. Gravitational potential energy का फार्मूला हमारे पास mgh. So increase in gravitational potential energy is 5400. Mass is 60 kg. Value of g we are taking 9.8 and we require to calculate the height. So just let's calculate the height now. Formula we have mentioned here. So 5400 divided by 60 times 9.8 is going to give you 9.18. Height is equal to 9.18. 2 से डिवीजन में लिखेंगे तो 9.2 meters will be the height. Unit must be written. Figure 2.1 shows a windsurfer sails and board.
The total mass of the windsurfer's sail and the boat is 90 kilogram. They travel at a constant speed of 5 meter per second. Calculate the total kinetic energy of the windsurfer's sail and the boat. So in this first part of question, we got to find the total kinetic energy of the windsurfer, sail and the boat. Formula for the total kinetic energy is 1 over 2 mv square. 1 over 2 mass is given 90 kilogram to 90 and velocity is 5 meter per second. 5 square. Let me calculate this. To calculate this one, 5 square multiplied by 90 divided by 2 is 1125. 25 राउंड ऑफ करेंगे 2 सेकेंड फिगर में, सो यू कैन राइट इट 1100 joules. The unit of energy is joule. The wind exerts a force on the sail. Explain in terms of the forces acting. Why the boat travels at constant speed. जब भी कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो उस पर जो रिजल्टेंट फोर्सेस होंगी, अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उस पर रिजल्टेंट फोर्सेस जीरो होंगी. इट मीन्स के फोर्सेस आर बैलेंस. अब इस पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? वन फोर्स इज द विंड दैट इज अप्लाइंग ऑन टू द बोट एंड द अदर फोर्स विल बी द फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन. सो दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगी. एज अ रिजल्ट द बोट विल मूव विथ कांस्टेंट स्पीड. सो फोर्स applied by wind will be balanced by frictional forces और ये फ्रिक्शन फोर्सेस कौन सी होंगी? द फ्रिक्शन ऑफ वाटर, बिकॉज द बोट इज ट्रैवलिंग इनटू द वाटर. सो नेट फोर्स विल बी 0. और जब नेट फोर्स 0 हो जाएगी तो फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है. द विंड डज वर्क ऑन द सेल. एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. व्हाई द टोटल kinetic energy does not increase. Why the total kinetic energy is not increasing even though the wind is doing the work? जब वर्क डन होता है तो चेंज ऑफ एनर्जी होता है और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज नहीं हो रहा है. इट मीन्स द वर्क डन ऑन द बोट इज बीइंग यूज्ड सम अदर वे. और वो अदर वे क्या है? वर्किंग अगेंस्ट द फ्रिक्शन. सो एनर्जी is being wasted working against friction or resistance. जब भी ये क्वेश्चन होगा कि we are doing the work but there is no increase in speed or no increase in kinetic energy, इसका आंसर सिर्फ ये लिखना है आपने कि जो भी एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं that is being used to overcome the frictional forces or is being used to work done against the friction, जहाँ पे एनर्जी लॉस हो रही है. This question here, figure 9.1 shows a conveyor belt carrying suitcase into an aeroplane. An electric motor drives the conveyor belt. A suitcase of mass 20 kilogram is lifted from the ground into the airplane. Explain what is meant by mass and by weight. What is mass? Mass is
amount of matter in a body at rest, and weight is pull of gravity. This is part of the definition. Definition आप याद कर लें. The gravitational field strength is 10 Newton per kg. Calculate the increase in gravitational potential energy of the suitcase. So formula for the gravitational potential energy is mgh. Mass हमें given है 20 kilogram. Value of g as this is 10, and height is how much? 6 meter. वर्टिकल हाइट लेंगे. रिमेंबर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए ऑलवेज वर्टिकल हाइट 6. सो 20 टाइम 10 इंटू 6, 20 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 6. आंसर इज 1200 joules. Okay, the next part of the question. The suitcase takes 12 seconds to travel 9 meters along the conveyor belt. Calculate the kinetic energy of the suitcase. अब इस क्वेश्चन में हमें पहले उसकी स्पीड निकालनी पड़ेगी. 9 मीटर ट्रैवल किया है 12 सेकेंड में. स्पीड का फार्मूला क्या है? v इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम. डिस्टेंस उसने कवर किया 9 मीटर. हाउ मच टाइम इट हैज टेकन? 12 सेकेंड. 9 डिवाइड बाय 12 इज 0.75. सो स्पीड हो गई 0.75 मीटर पर सेकेंड. Now we can calculate the kinetic energy. Formula for the kinetic energy is 1 upon 2 into mass into square of velocity. That is 1 upon 2. Mass is how much? Mass of the suitcase is 20 kg. Here it is. Into 20 into square of the velocity 0.75 whole square. Let me work out this one. 0.75 square multiply by. So answer is 5.6 joules. That is the kinetic energy possessed by the suitcase. The electric motor is powered by an input voltage. Okay, this part of the question we are leaving because this is from electric. Anyway, we can do that. The electrical motor is powered by an input voltage 230 volt and an current of 1.5 ampere. Calculate the electrical energy. Formula for the electrical energy is voltage into current into time. Voltage है हमारे पास 230. Current is 1.5 and time is 12 seconds. Do multiply all these three. 230 multiplied by 1.5 multiplied by 12. Answer is 4140 joules. Round off कर सकते हैं इसको 2 में. So 4100 joules will be the answer in 2 significant figure. State the principle of conservation of energy. So you can write the same answer. Energy cannot be created, neither be destroyed. It can only convert from one to another form. Explain how the principle applies to the lifting of the suitcase into the aeroplane. So total electrical energy provided to the motor will be equal to the potential energy and kinetic energy gained by the suitcase. And if the suitcase is moving with constant speed, then you don't have to use the word kinetic energy. In this case, we will say that the electrical energy provided to the motor is equal to the potential energy gained by the suitcase plus energy losses.
Some of the electrical energy of the motor comes from the renewable energy resources. Explain what is meant by renewable energy resources. All those solar energy which can be replenished and we can use again and again are renewable sources of energy. And state two renewable energy sources: wind energy, solar energy, tidal energy. They are all renewable sources of energy. Okay, so here we are ending this class. In the next class, we will be starting the new chapter, chapter pressure. Until that, take care. Allah Hafiz.